पर लाइफ में हैप्पी एंडिंग नहीं होती, वही होता है जो नानी कहती थी, एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए. Namaste Bollywood lovers, kali ini aku akan membuat sebuah alur cerita film India yang berjudul Dil Bechara. Film ini bergenre drama romantis dan diangkat dari novel karya John Green yaitu The Paul in Our Store yang mengisahkan tentang kisah cinta remaja yang sama-sama berjuang di tengah permasalahan hidupnya masing-masing. Penasaran? Tontonin terus ya. Di awal film kita disajikan dengan seorang cewek bernama Kizzy Basu yang sedang pergi ke pemakaman temannya. Setelah itu ibunya langsung menjemputnya, kemudian mereka pun pulang. Kizzy ini menderita kanker tiroid sejak kecil. Hal ini membuat dia harus memakai selang oksigen di hidungnya setiap saat. Tetapi dia selalu diberikan kasih sayang oleh kedua orang tuanya, serta tak lupa mereka selalu pergi ke dokter untuk berobat. Kizzy juga seorang mahasiswa, dan dia memiliki penyanyi favorit yang bernama Abhimanyu. Dan juga dia selalu mengirimkan email kepada Abhimanyu berisi curhatannya setiap hari. Anyway, आज के लिए काफी हो गया. कल मिलते हैं. Another boring day in the life of Kizzy Basu. Saat dia ingin pergi ke kampus, dia bertemu dengan seorang pemuda kocak yang bernama Emmanuel Rajkumar Junior atau Manny, serta temannya yang bernama GP atau Jagdish Pandey. Saat acara pensi di kampus diadakan, Manny menerobos dan mengacau, sehingga dia diusir oleh dosennya. Tetapi Manny tetap ingin menampilkan pertunjukannya dan akhirnya berjalan dengan lancar. Sepulang itu, Manny bertemu dengan Kizzy yang sedang menunggu jemputan ibunya. Kemudian, keesokan paginya, mereka datang ke perkumpulan orang yang memiliki penyakit dan berobat dengan dokter yang sama. Di sana Kizzy bertemu dengan Manny dan Jagdish Pandey. Ternyata Manny menderita kanker tulang sehingga membuat ia kehilangan salah satu kakinya dan dia menggunakan kaki palsu. Serta GP memiliki penyakit glukoma yang dapat menyebabkan kebutaan. Sepulang dari itu, Manny mengajak Kizzy ke danau. Danau itu tempat favorit Manny. Sampai di sana, Kizzy menyuruh Manny untuk mendengarkan lagu favoritnya. Tetapi Manny tidak menyukai itu dan menganggap itu hal yang membosankan. बोरिंग सॉरी तुम्हें तो लगेगा फिल्म ही नहीं है इससे क्या मैं बहुत कमर्शियल हूँ मुझे बहुत सैटरडे Dan saat Manny mencoba untuk merokok, Kizzy pun memarahinya. तुम्हें लगता है तुम लाखों लोग कैंसर से मर रहे हैं मैनी ये सांस ना ले पाना इट्स नॉट इजी मारने की ताकत जले हुए सिगरेट में होती है और मैंने इससे इसकी इट्स नॉट कूल और मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं कभी. Hari-hari berikutnya, mereka pun semakin akrab. Hal itu dilihat oleh ibu Kizzy yang kurang menyukai Manny. Di saat Manny gabut, dia pun memutar lagu favorit Kizzy. Dan akhirnya, dia pun menyukai lagu itu juga. Kemudian dia pergi menemui Kizzy di kamarnya dan mengatakan bahwa dia menyukai lagu itu. Lalu mengajak Kizzy untuk melemparkan telur ke rumah dosen yang memarahinya waktu di pensi. Kemudian mereka berencana untuk membuat film. Tetapi GP pun dioperasi satu matanya dan membuat ia buta sebelah mata. Namun mereka tetap melanjutkan dan membuat film itu. Scene berlanjut saat Kizzy mengajak Manny untuk makan malam bersama keluarganya. Kemudian Manny mengajak Kizzy untuk pergi ke pesta pernikahan.
इश्क रागों में जो सारे दिन सजा है ये फिर से मजा सजा महसूस हो ही तोड़ू आसा है एक हंसी मज़ाहिया. Keesokan paginya, Kizi mendapat email yang berisi undangan Abimanyu untuk menyuruh Kizi pergi ke Paris. Karena sebelumnya kan Kizi banyak mengirim email. Tetapi ibunya tidak setuju dia ke Paris. Akhirnya mereka pun berdebat. I have to go. ওটা মাইস রাইট এই অবস্থায় ওর সঙ্গে একা একা যাওয়াটা শরীরটা ভালো নেই। বাবা আমার শরীর ঠিক আছে না, তোমার শরীর ঠিক নেই কিজি। আমি কথা বলছি তো, লেট মি টক টু ডক্টর ঝা, উনি যদি মানে अगर वो परमिशन देंगे तो किजी. Kemudian mereka pun menemui dokter. Dokter pun berkata bahwa Kizi boleh pergi, tetapi harus ditemani. तो घर बसाने ने बेटा मैं तुझे अकेले जाने की परमिशन नहीं दे सकता। मैनी मेरे साथ होगा। मैं नहीं, उसके साथ तो कभी अकेले जाने की परमिशन नहीं दे। ओनली ऑन वन कंडीशन, अगर मिसेस बासु साथ जाए तो। माँ आमी माँ साथ चलेंगी। परफेक्ट आइडिया है बाबा। आमी क्या नो माँ पे कभी पेरिस नहीं देखा। आमी की करबो खाना। Malam itu Meni datang ke kamar Kizi dan Kizi mengajaknya ikut ke Paris. Setelah Meni pulang, penyakit Kizi pun kumat. ये इन्फॉर्मेशन तुम फोन पे भी दे सकते। हाँ दे सकते था, लेकिन मैं आज सुना है फर्स्ट किस बहुत स्पेशल होती है। हाँ, मुझसे पूछो ना, मैंने बहुत बार फर्स्ट किस किए, एक बार तो मैं पता था। आउट। लेकिन इस हालत में वजह से मिलने से मैं डर रही थी। कैसे कर बेटर तो अभी उससे नहीं मिले हम। Akhirnya setelah Kizi agak baikan, dia, ibunya, dan Meni pun berangkat ke Paris. You bring me back to life. सो किजी बासु अभिमन्यु वीर से मिलने जा रही हो या मिस्टर मैन से? तुम्हारा एक फेवरेट ड्रेस हुआ करता था, हर शाम को वो ड्रेस पहन के बैठ जा। यू लव दैट ड्रेस सो मच किजी बासु। आई लव दैट ड्रेस क्योंकि आपने मेरे लिए बनाया। ये ड्रेस भी मुझे ही बनाना चाहिए था। इट्स टू रिवीलिंग ना। ये बार बारी कर जो मामा। Setelah itu mereka menemui Abimanyu. Lalu Kizi mengatakan, "Kenapa kau tidak selesai menulis lagu favoritku?" Lalu Abimanyu pun menjawab, "Karena itulah kehidupan. Ketika orang yang kita cintai meninggal, maka apapun yang ada di hidup kita tidak akan terselesaikan." क्या उसे पूरा करने की वजह खत्म हो गई? प्यार तो आप डेफिनेटली करते थे, पर क्या अभी करते? पता नहीं, मैं तो जिंदा हूँ। शराब ईमेल किया था, असलम हो गया है। किसी चलो यहाँ से। बहुत डॉक्टर्स को दिखाया, कोई ठीक नहीं कर पाया। जब कोई मर जाता है, खुद को मारना साला इलीगल, फिर जीना पड़ता है। तो हंसो, गाना अधूरा क्यों था? क्योंकि ये सारी लाइफ ही अधूरी है। Mendengar hal itu, Kizi pun kecewa berat dan marah, lalu mereka pun pergi. Tetapi Meni pun berjanji akan menyelesaikannya. Dia akan menyelesaikan apa yang telah mereka buat, yaitu filmnya. I'll finish that. और मैं अभी भी गा के सुना सकता हूँ। एक सेकंड, मुझे स्माइल तो कर रही है तो। फिर हम मोमार गए थे, बहुत सुंदर था। और उसके बाद नोटर डाम। आई वाज आल्सो लॉन्ग वॉक। मैंने पेट स्कैन कराया, लाइक अ क्रिसमस ट्री। Can we just pretend? Yes. Live like this, right? Always. Setelah dari Paris, penyakit Meni pun kambuh. Hal ini menyulitkannya untuk melanjutkan membuat film. बना भी लेते तो क्या फर्क पड़ता, मैंने पॉर्न देखना बहुत मिस कर रहा है। क्या बोल रहे हो मैंने? करेंगे। और मैं कुछ नहीं कर पा रही थी।
Hal ini menyulitkannya untuk melanjutkan membuat film. Tetapi setelah diyakinkan Kizzy, mereka tetap melanjutkannya. अभिनय तो कभी नहीं. हीरोइन को तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता. Malamnya, Kizzy mendapat telepon dari Manny kalau dia sedang di bioskop, tetapi penyakitnya kumat lagi. Hal ini membuat dia harus dibawa ke rumah sakit. Lalu mereka tetap menyelesaikan film itu walaupun Manny sedang sakit parah. राजकुमार, रानी, तुम ठीक हो ना? बताओ भैया, क्या हो रहा है? I wanted to attend my own funeral. वैसे मुझे पता है कि मैं भूत बन के यही कहीं बैठा रहूँ. Di scene ini, Manny telah meninggal. राजा थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी. हर रानी एक कहानी सुनाती है. इससे पूरा वो राजा और रानी करते हैं. जन्म कब लेना है और मरना कब है. तो किसी बासु, ये राजा तो मर गया. Lalu Kizzy pergi ke acara nobar film mereka, dan film mereka telah selesai dibuat. Mereka semua menontonnya, dan semua orang menyukai film mereka. Hanya untuk informasi ya, film ini tuh film terakhir dari aktor Susan Rajpur Singh, dan dia meninggal di bulan Juni kemarin. Dan semoga aja dia tenang di sana. Kita lihat di film ini banyak orang yang memiliki penyakit yang parah berjuang untuk tetap hidup. Sedangkan kita yang sehat walafiat ini terkadang masih suka menyia-nyiakan hidup kita dan membuang-buang waktu kita. Jadi, gunakanlah waktu sehatmu sebaik-baik mungkin sebelum semuanya terlambat. Sekian itu saja alur cerita kali ini. Terima kasih yang udah nonton dan bye. Sorry, किसी बात.